Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all will be fine. I am Huniya Saleem and we are discussing the science lesson of class 4 today. So let's start our lesson with a good message and the beautiful hadith of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim. Objectives of our today's lesson is by the end of the lesson, students will be able to describe muscles, describe the importance of muscles, explain how many muscles in human body have, describe how muscles help us, discuss the functions of muscles. So let's start our lesson with some images which you have to relate with a particular things and guess with which things these images are all about. So in first image, you can see that the boy is running. Now look at this image. In this image, the girl is climbing a tree. What is happening in this image? In this image, the man is swimming. And here, the girl is skipping the rope. So you already know that each part of a body is important. We do different things by using different parts of our body. यानी हम भागते हुए, स्विमिंग करते हुए, क्लाइंबिंग ऑफ ट्री के दौरान रस्सा कूदते हुए अपनी लेग्स और अपने हैंड्स को यूज करते हैं. Am I right? यानी इन तमाम एक्टिविटीज में हाथों का, बाजुओं का और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का जो है वो यूज हुआ है. अब बेटे आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है. आपने एक चेयर के ऊपर बैठ जाना है और इस तरह से आपने टच करना है जो आपके लेग का, आपकी टांग का पिछला हिस्सा है, आपके घुटने की बैक साइड वाला. नाउ टच द फ्रंट पार्ट ऑफ योर लेग बिलो द नी, यानी अपने घुटने के नीचे टांग को आपने टच करना है इस तरह से. अब आपने क्या फील किया? आपने फील किया होगा कि जो फ्रंट है वो हार्ड है जबकि जो बैक साइड थी इसकी वो सॉफ्ट है. Both of the sides you touched would have made you feel there are different things inside your body. The harder part is your bone, and the softer part at the back is muscle. So today we will discuss about the muscles. Our body is made up of bones and muscles covered by a skin. Like this. If you see in this picture, your bones are inside your muscles and skin covers the whole body on the outside. Okay, my dear students, what are some of the things that we use our muscles for? हम अपने मसल्स को किन किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? There are lot of works जिनको हम अपने मसल्स के थ्रू ही कर रहे हैं. Talking, walking, breathing, smiling, eating, studying, driving. और यहीं पे सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे काम जैसा कि digesting, coloring, riding, even blinking of your eyes, sneezing, raising your hand, swimming, all these things are done by your muscles. आपको पता है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मसल्स मौजूद हैं? We have muscles all over our body. In our legs, hands, arms and in heart too. हमारा हार्ट भी, हमारा दिल भी एक मसल है. Tongue, eye, face, ears, neck, stomach and many others. All these muscles are present in our body. Does anyone go to gym classes or karate in this week? Did anyone have a game this weekend that they played in? Before you start any activity, what should you do first? जब आपने कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, क्रिकेट खेलनी होती है, फुटबॉल खेलना होता है, तो या कोई आपने जिम क्लास या कराटे की क्लास लेनी होती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं?
You stretch your body. Yes, stretching, 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 stretching. करते हैं ना आप लोग? So why should we stretch? Stretching keeps the muscles flexible, strong and healthy. इसीलिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि इसके बाद हम जो भी एक्टिविटी करें उससे हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल हों, स्ट्रॉन्ग हों और हेल्दी हो जाएं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आपकी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं? एनी गेसेस? यस, देयर आर 600 muscles in your body. How many muscles? You have or any human has 600 muscles in their body. Okay? How many muscles do you think are in our face and neck? यानी हमारी पूरी बॉडी में तो 600 मसल्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ हमारा नेक और फेस का जो पोर्शन है उसमें कितने मसल्स मौजूद हैं? Our face and neck contain about 1/4 of the muscles in our body, right? That is about 162 muscles. How many? 162 means 600 muscles in your whole body and your neck and face contain 162 muscles. Look at this smiley. He's smiling, right? क्या आपने कभी स्माइलिंग और फ्राउनिंग के बारे में सुना? इसे कहते हैं स्माइलिंग और दूसरी तरफ है फ्राउनिंग। इट टेक्स 17 मसल्स टू स्माइल, यानी आप अगर स्माइल करते हैं तो आपके जस्ट 17 मसल्स यूज हो रहे हैं एंड 43 मसल्स टू फ्राउन। और अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, भवें चढ़ा रहे हैं और आप रो रहे हैं और आप गुस्से में हैं तो फिर आपको क्या होगा? 43 मसल्स यूज होंगे। So what conclusions can we make from this statement? Smiling is always easier than frowning. यानी आपको हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। फ्राउनिंग अच्छी चीज नहीं है क्योंकि ये आपके मसल्स भी ज्यादा यूज करती है और स्माइलिंग में मसल्स भी कम यूज होते हैं। So that's why always smiling. Okay students, can you feel some of your muscles? अब आपको जो मैं एक्टिविटीज बताऊंगी आप उसमें अपने मसल्स को फील करेंगे कि आपके मसल्स कैसे और कहाँ वर्क करते हैं। ओके, होल्ड बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑब्जर्व दैट वेयर इन योर आर्म डू यू फील द मसल्स मूव। जब आप बुक को उठाओगे तो आपने देखना है कि आपके मसल्स की मूवमेंट कहाँ से हुई है आपके आर्म के अंदर और उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ मूव योर नेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन। अगेन लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन। What do you feel? क्या आपको नेक में मसल्स जो हैं वो फील हुए? Now move your finger around. Where do you feel your muscles move? Stand on your toes then. अब खड़े होइए अपने toes पे and do you feel the muscles in the back of your legs? Yes, you can. Means all these activities are done by muscles, muscles, muscles. So what is the importance of muscles? Muscles move your eyes as you read. Muscles in your chest allow you to breathe. Muscles allow a person to speak and chew. Every time your body moves, muscles are at work. So what are the functions of muscles? The very important function of muscle is muscle help you to move. आपकी तमाम मूवमेंट्स, आपका कुछ भी करना, किसी चीज को होल्ड करना, रखना, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, वॉक करना, भागना, स्किपिंग करना, आपकी हर मूवमेंट जो है उसमें मसल ही आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, यानी मसल्स हेल्प यू टू मूव। Muscles also help to move things around your body. For example, running, jumping, skipping, बॉल को हवा में उछालना, गिरी हुई बॉल को उठाना, किसी भी चीज को पुश या पुल करना।
इन तमाम मूवमेंट्स में मसल्स ही आपको हेल्प करते हैं और उन चीज़ों में हेल्प करते हैं जो आपकी इर्द गिर्द मौजूद हैं। My dear students, your heart is also a muscle. And do you know that it is very powerful muscle? It moves blood around your body. Heart pump blood and send to all the parts of your body through blood vessels. Your heart beat when you are awake, right? Your heart beat when you are awake and it beats while you are asleep. Heart muscles are called the cardiac muscles. Your stomach, lungs, kidneys, intestines are also a muscles, right? Do you know that how many times a minute do you think your heart beats? जो आपका हार्ट है वो एक मिनट में कितनी दफा धड़कता है? आपने ये अपने हार्ट वाले लेसन में पढ़ा था. The cardiac muscles in your heart cause it to beat between 70 and 80 times per minute. Some muscles are attached to your bones. कुछ muscles जो हैं वो आपकी bones के साथ attach होते हैं. And these are the muscles that give you strength and help you to move. और इस किस्म के muscles जो हैं also give us a shape. यानी हमारी body को जो shape मिलती है वो भी इन्हीं की वजह से मिलती है. चलो, that there are no muscles in the brain. In fact, there should not be. If somebody call someone a muscle head, it means they are calling that person a stupid. So meaning there is a muscle in their body where there should be a brain, right? So I hope so कि आपको lesson समझ आया होगा. Now let's summarize the lesson. आज हमने क्या सीखा? That human body has more than 600 muscles. Muscles enables the body to move. They also help to move things around your body. Your heart is also a muscle and it moves blood around your body. Some muscles attached to your bone, these are the muscles that give you strength and help you to move. Okay students, now it is your assessment time. So इस assessment में आपने अच्छे से जो questions मैं आपको पूछूं उनको write करके अपनी teacher को check करवाना है और उससे मुझे पता चलेगा कि आपने lesson में क्या समझा. How many muscles are in human body? What is easier, smiling or frowning and why? Reason भी आपने लाजमी देना है. What does muscles do? Okay boys, thank you.